Good morning, children. Today I am going to explain you Birches by Robert Frost. Now, what do you mean by birches? Birches are forest trees with very slender and flexible branches. You can easily bend them and they don't break, right? I start. When I see birches, I here refers to the poet. The poem is narrated in the first person, alright, and to an imaginary audience. When I see birches bent to left and right, the poet says that when he sees the birches, the tree birches, its branches bending from left and right across the lines of straighter, darker trees. Now these trees are along with the other trees which are straighter and darker. Straighter here means these birch trees are also standing in line with other trees which do not bend, which are erect, not bent, erect. And darker, some of the birches, they have barks, white color barks. So when the birches with white barks are standing along with other trees, the other trees look darker, so darker trees. I like to think some boy's been swinging them. And he says, when I see the birches bending down right and left, then he likes to think that some boy has been swinging on them. Okay? This swinging on the birches was a favorite game of the children, of the boys, of the villages in New England, the time when he wrote this. And Robert Frost himself used to be swinging on these trees. But swinging doesn't bend them down to stay. Now he says when he sees that the branches of the birches tree are bent, then he thinks that they have been bent by the boys swinging on them. When the boys swing on them, they pull the branches down, and the branches, I told you, they are very flexible, they don't break, they come down, and if a lot of time they have been brought down, they bend. But then what he says, but swinging doesn't bend them down to stay. Bend them down to stay here means bend them forever. If boys swing on them, the branches bend by during the time when the boys are swinging, and when they are not swinging, the branches go back. And this birches trees are very tall, 50 meters tall, so they go back. But he says, but swinging doesn't bend them down to stay. But if the birches tree has bent down to stay, means bend down forever, then that means there's another reason for that. By swinging, it cannot bend down forever. As ice storms do. Now he gives a reason. What is the reason which makes the birches bend down forever? That is the ice storms. Ice storms जब आती हैं तो वो आइस उसके ऊपर इतना कवर कर देती है ट्रीज को कि वो और काफ़ी दिन तक रहती है, तो वो बिल्कुल नीचे बेंड हो जाता है, और फिर वो इतना बेंड हो जाता है कि वो ऊपर नहीं जा पाता. Often you must have seen them loaded with ice. And he says that often, many times you must have seen the birches tree, the twigs, उसकी जो शाखाएं हैं, loaded with ice, covered with lot of ice. A sunny winter morning, early in the morning, in the sunny winters, when sun is there, after a rain. So after the rain, you can see in winters that the birches trees are covered or loaded with ice. That is, snow freezes and it forms the ice. The rainwater freezes and forms the ice. They click upon themselves, and as the breeze rises, when the breeze is blowing there, when the wind is blowing there, then what happens? The branches covered with ice, they click. They make clicking sound when the ice breaks upon themselves as the breeze rises. When the breeze rises, the branches
make clicking sound, and due to the sun the ice melts and it makes the clicking sound when the ice breaks as the breeze rises, and turn many colored as the stir cracks and crazes their enamel. Crazes means breaks, and enamel refers to the white coating of the snow. In the winters, lot of snow falls in the European countries. Lot of snow falls on the birch trees also. All right, and on a sunny morning when there is sun and breezes blowing, then that ice on the birches, what it does, it cracks. sun से वो melt करती है, वो crack होती है, and it breaks. What breaks? The ice on the birches tree. And breaks the enamel. Enamel means the white covering of the snow जो है ice है, उसको break कर देती है, crack हो जाती है वो. Soon the sun's warmth makes them shed crystal shells. और जैसे ही warmth, sun की जो warmth है वो ज़्यादा हो जाती है, वो पहले ice crack होती है heat से, और उसके जहाँ जहाँ crack होती है वहाँ से वो break होना शुरू होती है, और वो जो ice है वो ग्लास की तरह, क्योंकि ice भी ट्रांसपेरेंट होती है, ग्लास भी आइस ग्लास की तरह वो नीचे गिर जाती है. ठीक है. दो सन्स वार्मथ शेड crystal shells. Crystal shells here refers to shining ice pieces. जो आइस के जो टुकड़े हैं वो जब ब्रेक होते हैं तो बिल्कुल ग्लास की तरह हो जाते हैं और वो टूट के नीचे गिर जाते हैं. दे आर शाइनिंग आइस पीसेस. ठीक है. Shattering and avalanching on the snow crust. Snow crust means the ground covered with snow. So ऊपर लीव्स के ऊपर वो आइस था, वो क्रैक हुआ, वो पीसेस में नीचे गिरी. कहाँ पर गिरी? जहाँ पर डाउन देयर where the ground was covered with snow. Shattering and avalanching. ऐसा वो ऐसे सिस्टमैटिक नहीं करी, शैटर होके एकदम से ऐसे स्प्रेड होके नीचे गिर गई. जैसे वार्मथ आई, क्रैक हुआ और वो आइस है नीचे गिर गई. एंड एवलेंचिंग इसे जैसे स्लाइडिंग लाइक अ स्नोफॉल, जैसे स्नोफॉल आती है ऐसे स्लाइड करे वो सारे आयरन के ग्लास के पीसेस, आइस के पीसेस ग्लास की तरह. Such heaps of broken glass to sweep away. और वो सारे जो आइस थी वो नीचे गिर गई ऑन द स्नो ग्राउंड, और उसने क्या बना दिया? एक हीप बना दिया, जैसे एक के ऊपर एक हम सामान रखते, कूड़ा रखते ऐसे. सच हीप्स ऑफ ब्रोकन ग्लास. तो वहाँ पर ब्रोकन ग्लास यहाँ पर है, स्नो क्रिस्टल्स वहाँ पर उस अंडरनीथ द ट्री फॉर्म हो गए. तो स्वीप अवे, वो जब हवा आएगी इट विल मूव अवे. यूड थिंक द इनर डोम ऑफ हेवन हैड फॉलन. जब वो आइस के पीसेस जो ग्लास के पीसेस, ब्रोकन ग्लास के पीसेस की तरह लग रहे थे, नीचे गिरे बर्फ वाली जमीन पर, तो ऐसा लग रहा था कि द इनर डोम ऑफ हेवन हैड फॉलन. इनर डोम, व्हाट इज द इनर डोम ऑफ हेवन? स्काई. And it was believed by the thinkers that the sky separates the heaven from the earth. ठीक है. स्काई हेवन को अर्थ से सेपरेट करता है. तो जब वो बर्चेस के ऊपर जो आइस थी, जब वो मेल्ट होगी, वो उसके टुकड़े हो गए और टुकड़े नीचे गिर गए, when the pieces broke down, then it looked like that the sky of heaven had fallen down. And they were like आइस पीसेस थे, तो जो उन पे जो सन का रिफ्लेक्शन होगा तो डिफरेंट कलर्स रिफ्लेक्ट करेंगे. दे आर ड्रैग टू द विदर्ड bracken by the load. So they seem not to break. और इतने they were so heavy laden with snow and ice that the branches were almost touching the ground where there was withered bracken. Withered bracken refers to dried up ferns. तो जब वो उस पर स्नोफॉल हुई और फिर उसके बाद रात को पाला पड़ा, वो फ्रीज हो गया, आइस बन गए, और वो फिर आइस जब धूप आई तो वो आइस मेल्ट हुई और पीसेस में नीचे गिर गई
और वो जो वेट था उसका, आइस का वेट ऑन द ब्रांचेस, वो इतना ज़्यादा था कि इट मूव्ड, ड्रैग मीन्स मूव्ड, partly moved, made the branches come down to the earth, to the ground, where there were withered bracken, where there were dried up ferns by the load. This is load of the ice, and they seemed not to break, and they the branches did not break. इतना लोड था, वो नीचे बिल्कुल झुक गए थे, ज़मीन को टच कर रहे थे, but they were not broken, because I told you they are very flexible. Though once, so they were not broken, and they seem not to break. Though once they are bowed so low for long, they never right themselves. But it is said that if they are lowered, अगर वो जो branches हैं वो नीचे झुक जाएं और काफ़ी देर के लिए, so low for long, अगर बहुत देर के लिए वो झुकी रहीं, then they never right themselves. They never right themselves का मतलब है फिर वो straighten नहीं होती, then they cannot straighten, तो वो सीधी नहीं हो पाती, then they cannot straighten themselves. So he means to say, when he sees the birches, he remembers that how the boys play on the branches of this, how they swing, and then he sees them bending down, and he thinks maybe a boy has been swinging on it, but then he realizes that ये जो birches के branches हैं इतने ज़्यादा bend हैं, ऊपर straight नहीं हो रहे हैं, तो ये swinging से नहीं होते हैं. This is because of the ice storms. ice का storm आया और उसने इतना ज़्यादा उस पेड़ पे ice जमा हो गई कि उसके वेट से वो काफ़ी देर तक नीचे झुकी रही, एंड जब बहुत देर तक झुकी रही तो वो इट couldn't straighten itself. You may see their trunks arching in the woods years afterwards. और बाद में आप कभी देखोगे तो आप देखोगे कि वो जो ब्रांचेस हैं वो सीधी नहीं है, स्ट्रेट, वो क्या हो गया, आर्च के फॉर्म में, बो के फॉर्म में तुम्हें दिखेंगी. ट्रेलिंग देयर लीव्स ऑन द ग्राउंड and they're pulling their leaves on the ground, like girls on hands and knees that throw their hair before them over their heads to dry in the sun. यहाँ पर कंपैरिजन किया हुआ है कि वो जो बर्चेस ट्री के जो ब्रांचेस बिल्कुल नीचे बेंड हो गए हैं और एक आर्च जो फॉर्म हो गया है, वो कंपेयर किया है बड़ी डेलिकेटली पोएट ने. द कंपैरिजन इज अ सिमिली दैट वो जो ब्रांचेस बेंड हो रखी हैं, दे आर लाइक द गर्ल्स ऑन हैंड्स एंड नीज. जो गर्ल्स व्हेन दे वॉश द हैंड्स, यहाँ पर जो पिक्चर पेंट की है, द गर्ल्स दे आर ऑन द नीज एंड हैंड्स, ऑल फोर things, and their hair is on their face, and they are trying to dry them up in the sun. ठीक है. But I was going to say, when truth broke in, truth means the fact that birches had been bent by the ice storm. Fact क्या था कि जो birches bent हुए थे, ट्रूथ क्या था, जो बेंड हुए थे वो आइस स्टॉर्म से हुए थे, ना कि किसी लड़के के स्विंगिंग से. विथ ऑल हर मैटर ऑफ फैक्ट मीन स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना अबाउट द आइस स्टॉर्म, आई शुड प्रेफर टू हैव सम बॉय बेंड देम. उसका फैक्ट तो ये था कि जो बर्चेस ट्री बेंड हुए हैं ये आइस स्टॉर्म से हुए हैं, लेकिन बट द पोएट वॉन्ट्स कि ये वो इस तरीके से लेना चाहता है कि ये जो बेंड हुए हैं ये स्विंगिंग से हुए हैं ऑफ अ बॉय. तो फैक्ट जो है वो तो ये है कि आइस स्टॉर्म आया था, और जो वो इमेजिन करना चाहता है यहाँ पर जो थीम है दैट इज रियलिटी वर्सेस इमेजिनेशन. रियलिटी है कि स्टॉर्म ने उसको नीचे गिरा है, बट पोएट वॉन्ट्स टू इमेजिन दैट दे हैव बीन बेंड बाय द स्विंगिंग ऑफ द बॉयज. Next, I'll continue in the next video.